So hello friends, today we are going to solve repeated IDs problem from Geek for Geeks. So let's move on the Geeks for Geeks to solve the problem and let's see what the problem statement input and output format. So we are going to solve a repeated IDs problem and this is a arrays basic level problem. So let's see what is the problem statement. So problem statement is Geek is given a task to select at most 10 employees for a company project. Each employee is represented by a single digit ID number which is unique for all the selected employees for the project. Geek has a technical problem in his system which printed ID number multiple times. You are given array A of an element having all printed IDs. Help him to get rid of repeated IDs. सो प्रॉब्लम बेसिकली ये है कि हमारे पास 10 ज़्यादा से ज़्यादा 10 एम्प्लॉय के आईडी नंबर दिए हुए हैं जिसमें हमको कोई भी आईडी नंबर कई बार मल्टीपल पर रिपीटेड हो सकती हैं। सो हमको क्या करना है बेसिकली कि उस मल्टीपल रिपीटेड आईडीज एरे में से हमको यूनिक आईडी को सेलेक्ट करके उसको रिटर्न करना एज ए इंटीजर फॉर्म में। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय इनपुट फॉर्मेट. So n equal to 5, that means the number of element in the array is 5 and the array's element is 8, 8, 6 to 1. Here 8 is repeated by 2 times. So after solving this problem, it will become 8, 6 to 1 that has all IDs number uniquely. In the example 2, the number of elements in the array is 6 and the elements are 7, 6, 7, 4, 2, 7. In this ID's numbers array, 7 is repeated 3 times. So if we print or return array that contains all IDs only once, so the ID will be 7642 and our task is to print the complete the function unique ID which takes the array A and its size n as an input parameter and return the list containing non-repeated IDs of employee in the same sequence of the appear. So यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि हमको सारे IDs को सेम सीक्वेंस में ही रखना है जिसमें वो पहले दिए गए थे. So let's understand this by code. So basically all IDs are in a long data type format. So first we create a list of a long array list that contains long type value. So our approach is to solve this problem is we traverse the each array one by one and first we check if the ith element of the array is already present in the array list or not. If they present in the array list, we does not do any work and continue the process again. And if the ith element is not present in the array, we basically put in the element in the array. So first we create an array list of long type and we traverse the element of array by from 0 to n, and this is if a arrays list contains ith element of array I, so it continue the process and again it skip this line and go for the next iteration. And it if a array list does not contain the array's ith element, it basically add it to array list. So our list contains all unique element from the array ARR. So basically हमको इसमें ये दिक्कत होगी कि हम यहाँ पे लॉन्ग ऑब्जेक्ट का एरे लिस्ट बनाए हैं बट हमको यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप का एरे रिटर्न करना है. अगर हमको यहाँ पे इंटीजर ऑब्जेक्ट का एरे रिटर्न करना होता तो हम इसको टू एरे फंक्शन की मदद से इसको चेंज करके टाइप कास्ट करके रिटर्न कर सकते थे. बट यहाँ पे इंटीजर एरे दिया है, डेटा टाइप दिया है. सो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने यूनिक एलिमेंट एरे लिस्ट का साइज फाइंड करेंगे साइज फंक्शन की मदद से. सो साइज
our size, that is a result size equal to list dot size, and we create an array result of that size, result size, and in the function we traverse the whole array list from 1 to size of array list, and we get the value from array list ith element and convert into integer data type value, and then store it into results ith value. सो बेसिकली ये जो है हमारे लिस्ट के ith एलिमेंट को उठा रहा है, जो कि लॉन्ग ऑब्जेक्ट टाइप का है, और इंट वैल्यू की मदद से इसको इंट डेटा टाइप में कन्वर्ट करके एरे लिस्ट रिजल्ट के ith एलिमेंट में स्टोर कर रहा है। सो ये बेसिकली जीरो से पूरे लिस्ट को कर रहा है, तो हमारा पूरा जो एरे लिस्ट का एलिमेंट्स है लॉन्ग ऑब्जेक्ट टाइप का, वो हमारे रिजल्ट में इंटीजर डेटा टाइप में फॉर्मेट में स्टोर हो जाएगा, और हम यहाँ पे इसको रिटर्न कर देंगे। So let's submit this solution. So basically our all test cases passed successfully, and let's discuss about the time complexity of this approach. So basically time taken by this approach is big of n, because we traverse the whole array element once and then again once. That means big of n plus big of n, that is equal to 2 big of 2 plus n. So it basically big of n times, and the auxiliary space is big of auxiliary space is number of unique elements in the array. So we create here a list that is our extra space, and it will the size of unique element from the array. So if this video is useful to you, so do follow, like, and don't forget to subscribe our channel. Thank you.